Hello guys, today in this video I am going to cover motion of wave packets, Ehrenfest theorem. Quantum mechanics was built to give a correspondence between wave packets to the particle nature of matter. तो क्वांटम मैकेनिक्स में करस्पेंडेंस जो वेव पैकेट्स और पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर है उसके बिटवीन शो करने के लिए ये इक्वेशन होती है. Ehrenfest theorem states that quantum mechanics provides the same results as the classical mechanics for a particle for which the average or expectation value of dynamical quantities are involved. The proof of the theorem for one-dimensional motion of particle may be given by showing first position d by dt px by m dpx dt इक्वल टू fx. सो ये जो डायनेमिकल क्वांटिटीज़ हैं इनके डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स लिए गए हैं और हम इन्हें प्रूव करते हैं. प्रूफ ऑफ द फर्स्ट इज लेट x बी द पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m एट टाइम t. द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x इज गिवन बाय द रिलेशन एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x minus infinity to plus infinity psi star the function of x comma t x psi x comma t dx. This is the first equation. Now differentiate this equation by t. dx by dt is equal to minus infinity to plus infinity x dot dy dt psi star dx. This is the second equation. Now we get the expression. Now we use the expression from equation of current density. d by dt of psi star is equal to I h cut to by 2m del by del x psi star del y del x of psi star y dx. Now this is the third equation. Put 3 equation in second equation. Now dx, the expectation value of x by dt is equal to I h cut by 2m minus infinity to plus infinity x del by del x psi star del by psi y dx minus psi star d over dx and into dx, integrating right hand side by parts. So इस इक्वेशन को हम कर देंगे by parts integrate. Now dx by dt is equal to I h cut by 2m x psi star psi derivative psi minus psi star derivative minus h cut I 2m. तो इस तरह से ये इक्वेशन सिमिलर हो गई. When x approaches to infinity or minus infinity, psi and dy dx psi approaches to 0. So the first term becomes 0. Now d expectation value of x by dt is equal to minus I h cut by 2m minus infinity to plus infinity psi star dy dx minus psi dy dx into dx. The expectation value of px may be written as px minus infinity to plus infinity psi star h cut over I iota d by dx of psi dx. तो इस इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे. तो जो I ओवर h कट हो जाएगा वो px की साइड चला जाएगा. तो ये होगी फिफ्थ इक्वेशन.
अब इसी इक्वेशन को हम जब कंजुगेट की फॉर्म में लेंगे, साई स्टार की फॉर्म में लेंगे, तब यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। नाउ पुटिंग 5 and 6 in the fourth equation, we get dx over dt equal to minus I h cut to m I over h cut px plus px over h cut. So this equation is proved. dy dt of expectation value of x is equal to px over m.